This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, बिजनेस न्यूज मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Domestic stocks log modest losses in afternoon trade, pairing early gains. Sensex falls to trade at 47,734. Nifty slips at 14,300. Rupee strengthens by 13 paise against the US dollar in the afternoon deal, and Brent prices rise to hit $68 per barrel mark. And let's have a look at our top story. Sensex and Nifty today declined more than 0.4%, losing early gains in afternoon trade amid negative global cues. Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 215 points or 0.45% to trade at 47,734. Nifty at the National Stock Exchange also slipped 59 points or 0.41% to trade at 14,300. The broader market at the BSE performed better than the Sensex. Mid-cap rose at 0.88% and the small-cap index appreciated by 0.78%. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में दोपहर कारोबार में आज समाचार तैयार किए जाने तक $1 की तुलना में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 75 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.14% घटकर 90.94 पर आ गया। हमारे साथ बुलेटिन में खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन राय। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। उदयन जी, आज बाजार में जो चलन देखने को मिल रहा है, शुरुआती तेजी खोकर थोड़ा घाटे में दिख रहा है सेंसेक्स, लेकिन छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। किन अर्थों में ले रहे हैं आज के कारोबार को? देखिए मनोज, ये कुछ जो हमारे कोविड से जुड़ी हुई खबरें जो आई हैं, सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और कुछ जो कदम के बारे में घोषणाएं हुई हैं, इसको मार्केट्स और एनालिस्ट इसको अच्छी तरीके से इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच करने की कोशिश करेंगे इसके इम्पैक्ट कितना डीप होगा, कितना ज्यादा होगा। और ये एक दो हफ्ते की बात है कि इस ज्यादा वक्त भी लग सकता है, 5-6 हफ्ते से भी आगे निकल जाएगा। तो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो आपने विदेशी बाजारों की जो खबरें पड़ी, जहां पे थोड़ा सा पॉज रहा है, तो उससे एक इम्पैक्ट हमारे अभी तक जो है बाजारों पे, उसका एक इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। Udayan, the big news in today's trade, because we still have half an hour to go before market closes, is that the pharmaceutical index has really picked up. Will this trend continue, and what are the fundamental reasons apart from COVID-19 and the vaccination drive? Well, I think it's one of those initial sort of reactions, Arjun. Basically, they're seeing whichever was economy related or economy opening up related sectors, people are moving away from there and moving to whichever sectors where that impact is going to be less or the least. So it's just one of those initial things where people are looking at pharma. Otherwise, Arjun, if you look at pharma, most of your lifestyle oriented procedures, say a heart procedure and others, they are right now getting postponed, and they are the most profitable sort of areas. So this is one of those initial reactions. We should not read too much into it because the most profitable areas are now on hold. Also, volatility is a factor. It's gone up by 10%, even though it's under 20 at 17.7 for at least 15 minutes ago. What would you advise small investors where they're seeing a bounce in the pricing, either going up or coming down? What would you advise them at this point? Because this lockdown come curfew will be extending for at least a week. Well, Arjun, the point is that if it's a small lay investor who's an investor, not a trader, I can only speak for that category of people, and I would say that don't try to
take advantage or disadvantage, try to time the market at the moment. This is not the right time. If you've already invested, stay invested. If you see something really, really exciting, go for it. Otherwise, wait for the whole thing, the whole froth or the turbulence to settle down a little bit, because it's going to move zigzagly. We get very definite information about a whole lot of things. उदिन, रुपए पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आज रुपए में 13 पैसे की मजबूती दोपहर कारोबार में देखी जा रही है। पिछले कुछ सत्रों में हमने अच्छी खासी गिरावट रुपए में देखी। अब यह किस दिशा में जाता दिख रहा आपको? देखिए मनोज, ये थोड़ा बहुत रुपए प्रेशर में जरूर रहेगा। तेल के दामों की वजह से रहेगा। कुछ और जो चीजें पीछे आती चली जा रही है। डॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि इकोनॉमी में एक बाउंस बैक सा, उनकी इकोनॉमी में एक बहुत जबरदस्त बाउंस बैक की तरफ हम इशारा मिल रहा है, आंकड़े हैं। तो थोड़ा प्रेशर तो वर्सेस द डॉलर हमारे रुपए थोड़ी बहुत प्रेशर में रहेगी, पर जो एक बहुत जबरदस्त दबाव जिसका जिक्र आप कर रहे थे, शायद वो इमीडिएटली ना दिखे हमें। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख दोपहर कारोबार तक समाचार लिखने तक दिखा है। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 2% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.5% घाटे में रहा। दूसरी ओर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की वृद्धि देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% ऊपर आ गया। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक नरमी दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.5% घाटे में था। फ्रांस का CAC 40 0.7% नीचे कारोबार कर रहा था। उधर जर्मनी का डेक्स 0.2% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the U.S. stock market, the three major U.S. stock indices slid from record levels yesterday as investors awaited solid guidance from first quarter earnings to justify the rich valuation equities they're trading at. Dow Jones Industrial Average fell 0.4%, S&P 500 declined 0.5%, and the Nasdaq Composite Index plunged 1%. Udayan, when the previous surge of COVID-19 was detected and a lockdown was brought in, the stock indices actually fell like a rock and circuit breakers were instituted. How do you see the stock exchange managing the current situation? Do they see a price fall, and how will they manage it? Well, Arjun, as I mentioned a little earlier, people are still trying to understand, and nobody is now talking about a very broad-based, large, long period lockdown. There would be very targeted sort of restrictions. The other part, Arjun, is that people also now know that the vaccination drive is on. So at some point, you will probably get your nose and your whole body ahead of the fresh infections, and the cycle would get broken. And beyond these 6-8 weeks, there's a lot that is going in for our country, and a lot of things are visible. We now know for sure that once things start moving on its course, it will probably move faster than anticipated. So we have had that experience about a year. So that is why there will not be such a precipitous sort of development that we saw. Udayan, sorry to cut you short. We have more stories in the lineup. Moving on to the oil market, Brent prices today rose to trade at $68 per barrel mark, hitting its highest in a month. The crude prices rose around 1.5%, supported by a disruption to Libyan exports and expectations of a drop in U.S. crude inventories. However, the rising coronavirus cases in Asia capped the gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $68 per barrel, but WTI crude prices were around $64.20 per barrel. श्रोताओं की ओर से हम उदयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नजर डालें सराफा बाजार पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के संकेतों पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 130 रुपए घटा 47,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी 60 रुपए मजबूत होकर 68,380 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। मनी मैटर्स के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर कारोबार में गिरावट के साथ हो रहा कारोबार। शुरुआती तेजी खोकर सेंसेक्स 47,734 अंक के स्तर पर आया। निफ्टी 14,300 के स्तर से नीचे फिसला।
$1 की तुलना में दोपहर कारोबार में रुपया हुआ 13 पैसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $68 प्रति बैरल के पास पहुंची। And that's it in this edition of Money Matters for now. Goodbye.